Today we will discuss about the MVV estimator examples, and now we start the first question from normal population. The question is to obtain the MVV estimator for mu in the normal population and where sigma square is known. अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चलिए इसको नोट डाउन करते रहिएगा। पेन पेपर ले लीजिए और नोट डाउन करते जाइए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पेन पेपर लें और नोट डाउन करते जाएं। सबसे पहले तो एमवीवी एस्टिमेटर निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं जो कि हमें याद होना चाहिए। एक स्टैटिस्टिशियन को फंक्शंस तो सबसे पहले याद होने चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या हमारा पीडीएफ होता है वो हमें याद रखना है। तो 1/सिग्मा √2 एक्सपोनेंशियल देन सिग्मा xi माइनस सिग्मा भी नहीं आया, x minus mu whole square upon 2 sigma square. Okay, then process of the MVV estimator. First of all, we find the likelihood L, then we will find log L, and lastly we find del upon del mu log L is equal to t minus gamma theta upon lambda theta. Okay, so this process continues. So first of all, we find the likelihood of this PDF. So 1/sigma √2 to the power n exponential minus sigma xi minus mu whole square upon 2 sigma square. Now we will find log L minus L and log √2 sigma minus 2 sigma square sigma xi minus mu whole square. Because this term is constant, when we differentiate with mu, this term will be constant. Then now we will find the del upon del mu log L 1/2 sigma square. For this, sigma 2 xi minus mu and minus 1. Now sigma xi minus mu upon sigma square. Then sigma xi minus n mu upon sigma square is equal to sigma xi. That means if we divide it by n in the numerator and the denominator, then we will find x bar minus mu upon sigma square upon n. Then we will compare with this. Then our MVV estimator
would be x, x bar. T is equal to x bar. T is equal to x bar, and variance of x bar is equal to sigma square upon n. Thank you so much for watching. See you next question.